Well, amid a global surge in COVID cases, the government of India has ramped up its preparations. In states in India have strengthened their testing infrastructure nationwide and released recommendations for individuals to abide by. There are several states that have started taking measures or preparing new guidelines for the general public to follow to deal with the COVID cases and to stop the spread of COVID-19. Yesterday, Prime Minister Narendra Modi in his last Mann Ki Baat address urged people to take appropriate precautions and asked people to follow measures like wearing masks and washing their hands in his final Mann Ki Baat speech of the year. Earlier, in a meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi with the state chief ministers, asked states and union territories to take the necessary action to prevent the spread of COVID variant BF.7 at the meeting. So India is well set there to of course prepare and take note of the rising COVID-19 cases amid the outbreak that is taking place in China. My colleague Rajat is joining us on the broadcast to give us updates. Rajat, take us through the development that are pouring in as far as the COVID-19 cases are concerned, in particularly with Noida. देखिए, बिल्कुल अगर हम नोएडा की क्या पूरे प्रदेश की बात करें तो कोविड को लेकर सरकार है वो अलर्ट पे है। लगातार पीएम भी जो राज्य सरकार के उस पीएम है उनसे वार्तालाप करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके चीन के हालात हैं, चीन में आंकड़े बढ़ रहे, तो ऐसे में भारत सरकार को भी सतर्क रहने की जरूरत है। अगर हम हालांकि चीन के बाद भारत में भी आंकड़ों में काफी बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते प्रदेश सरकार ने जो यूपी की बात करें तो यूपी में नोएडा की बात करें, नोएडा में भी जो कहे तो टेस्टिंग है वो बढ़ा दी गई है। लगातार जिला प्रशासन है वो स्वास्थ्य महकमे के साथ बैठक कर रहे हैं और साथ ही आदेश पर आदेश दे रहे हैं, जिसके चलते जो अब कहे तो यूपी सरकार ने भी एक आदेश जारी किया जिसमें जितने भी पुलिसकर्मी के विभाग होंगे उनको भी मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। वही नोएडा की बात करें, नोएडा में जो हाईटेक सोसाइटी है उसके अंदर जो भी महिला काम करती होगी, कोई भी व्यक्ति होगा, वो मास्क पहनना बिल्कुल पहले से जैसा ही अनिवार्य कर दिया गया है। प्रशासन है वो अलर्ट पे है। साथ ही नोएडा की बात करें, हालांकि नोएडा की स्थिति पहले से काफी ठीक है, अभी भी कोई भी नए कोविड केसेस हैं वो नोएडा में फिलहाल नहीं मिले हैं। लेकिन नोएडा सीएमओ का मानना है कि हम जो बूस्टर डोज की ज्यादा मांग हो रही है, वहीं जो जिला अधिकारी है स्वास्थ्य अलवाई वो भी लगातार स्वास्थ्य महकमे के साथ बातचीत कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। आखिर किस तरीके से अगर केसेस बढ़ते हैं तो उसको किस तरीके से काबू में पाया जाए, जो बढ़ते कोरोना को लेकर किस तरीके से गाइडलाइंस है वो जारी की गई है। लेकिन अभी की स्थिति ऐसी है कि लोगों की जो मांग है बूस्टर डोज की ज्यादा है। हालांकि नोएडा जिला अस्पताल में बूस्टर डोज है वो उनका समाप्त हो चुकी है, जिसके चलते नोएडा सीएमओ ने बूस्टर डोज की प्रशासन से मांग की है। उसके बाद बूस्टर डोज आने के बाद जो जब लोगों की जो की लाइन लगी है जिला अधिकारी कार्यालय पर बूस्टर डोज को लेकर, अगर बूस्टर डोज लगती है तो जाहिर सी बात है तो आने वाले समय में अगर कोविड के केसेस बढ़ते हैं तो इस पर काफी लाभदायक होगी, साथ ही कोविड केसों में काफी गिरावट दर्ज की जाएगी। All right, Shakti is also joining us on the broadcast to give us updates. Shakti, tell us about what exactly the Bihar government is taking steps in order to curb the rising COVID cases amid the outbreak that is taking place in China. देखिए, बिहार सरकार इसको लेकर काफी अलर्ट है और कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा है कि जो कोविड के केसेस है बिहार में नहीं थे, लेकिन अभी अब ब्रेकिंग न्यूज अपने दर्शकों को दे दे कि गया में जो है 4 विदेशी जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें कि आपको बताया कि दलाई लामा के कार्यक्रम में 4 विदेशी जो थे वो भारत आए थे, जिसमें इंग्लैंड और थाईलैंड के बताए जा रहे हैं। 4 का जो RT-PCR टेस्ट है वो पॉजिटिव पाया गया और 4 को जो है बोधगया में एक होटल में आइसोलेशन में रखा गया है। तमाम उसके अलावा बिहार में जो है खास करके अन्य जिलों में जो कोविड के केसेस हैं वो अभी तक भी 0 बताए जा रहे हैं। लेकिन गया में भी ब्रेकिंग ये आ रही है कि 4 विदेशी जो आए थे यहाँ पे दलाई लामा के पूजा शामिल होने के लिए, उन 4 का टेस्ट जो है पॉजिटिव आ गया है। जी। All right, Dr. Ishwar Gilada is also with us on the broadcast at this point of time. Dr. Gilada, when it comes to curbing the spread of COVID-19, what steps do you now recommend for the people? Because wearing masks and putting on sanitizers, social distancing is something we've already done. What next? See, for people currently there is no need to panic, and as all of them know now that this COVID and respiratory infections are spread through mouth and nose. So if you cover this area, it is good for you and good for others to have kind of prevention. Secondly, mask is not only for COVID prevention; it is also for H1N1, RSV,
which is a respiratory syncytial virus. And both of them are currently more than COVID. Also, a seasonal flu or seasonal viral fever, tuberculosis, pollution. So it will prevent you from a lot of things. Beyond that, nothing much is required. As much as we wish there should be social distancing in a country like India with 140 crore people, you see Mumbai locals, buses, airports, they are neck to neck with people. We cannot expect. So whenever they go in public places, they must be covered with their face mask. So if that is done, I think that is more than enough. Importance of sanitizer has been already emphasized in our culture since beginning. And last 3 years, people have been used. Some of them are paranoid. They wash multiple times hands and with sanitizer. So I think for that we do not need to emphasize. They should take precaution dose. If they are not taken, the currently approved vaccine, which is the intranasal vaccine, that is much better than previous vaccine that provides you double prevention. One is the prevention for yourself of not getting infection, and second is prevention to others. If you are infected, they will not get infected. Up till now, whatever vaccines are there, they only provide one-way traffic. That is, you are prevented. You do not prevent others. And secondly, it is a without injection, 4 drops in one each nostril. I think it is a very simple technique, and it has no side effects. So those people who had some hesitancy of taking vaccine because of injection and because of adverse effect of the injection, they should opt for this intranasal vaccine. And our request to the government is that make it open. Do not confine it to only vaccination centers. If it is like just a nasal drop, if people do not want to register on COVID, fine, then let them take the vaccine. It has no adverse effect. They have done a study, which is the phase 3, 3,100 people, not a single death, not a single adverse severe adverse effect. Whatever the small adverse effects were there, they're like sneezing, headache, little bit fever, body ache for a day. That's it. So in that sense, and that too, that can be because of allergy. So allergy is because of some of the vehicles which are used to make a vaccine. It can be in injectable, it can be in nasal, it can be in oral. Anywhere it can be there. Lastly, most important thing, we have eradicated polio. Why we eradicated polio? Because it was an oral polio. If it was injectable, people would not have preferred to take. And that was also a fecal-oral route, because polio is spread from fecal-oral route, that is from your stool and paralysis. And therefore, if that is the principle, because the virus enters from nostril, giving vaccine in nostril gives you added immunity. What are these immunities? IgA immunity, which is nowhere else than the nose, IgG immunity, and T cell immunity. Apart from that, there is a nasal mucosal immunity. So with this kind of immunity, immunity is better than that. And I think currently we are all protected because of the natural infection up to 90%. 75% of them are doubly vaccinated, 25% are triply vaccinated. We have a very good hybrid immunity. So even if 4 cases have come from Thailand and they are found positive, nothing to worry. Just let the medical administration do the job of the whole genome sequencing. Let us establish whether BF7 has come in a very big number. Let us establish whether new variants are coming. Because India is not bothered about, or India should not be bothered about, any new variant of Omicron. Because we are having Omicron BA.2, and now it has become XBB, but both are BA.2. And whatever new variants are there which are creating havoc in East and the West, that is BA.7 and BQ.1 in USA and Brazil. And both are descendants of BA.5. So BA.5 has never been in India, BA.4 has never been in India, and that's the reason that we are protected against all this kind of variants which are making havoc for last 10 months. Omicron has been a variant of support to India. It is not a variant of concern. So let us follow what government says, but at the same time, don't panic. Enjoy your new year. If it was 2020 was a Wuhan virus year, 21 was a Delta virus year, 22 was a Omicron year, 23 will be fine. Right. Akash Yadav is also joining us on the broadcast, my colleague from Varanasi. Akash, what is the update when it comes to UP and all the steps that are taken by the government?
देखिए, बनारस में कोविड की बात करूं तो कोविड यहाँ पे एक भी संख्या नहीं, हालांकि उसकी रोकथाम को लेकर, इसके लक्षण को प्रक्रिया को और उपचार को लेकर लगातार अधिकारियों के साथ बैठक किया जा रहा है। आपको बता दें कि बनारस में जितने भी सरकारी अस्पताल है उन्होंने अपना हेल्प डेस्क नंबर जारी कर दिया है। आप घर बैठे भी सलाह ले सकते हैं। उसके साथ ही यदि आपके सर्दी जुकाम हो तो बगल के हेल्प डेस्क में जाके आप टेस्ट करा सकते हैं और अपने आप को आइसोलेट रख सकते हैं। तो जो बनारस में जो बैठक चल रही है कोविड को लेकर, जिस तरीके से चीन के हालात बिगड़े हैं वैसा हालात भारत में न हो, अपने काशी में न हो, उसको लेकर लगातार अधिकारियों के साथ बैठक हो रही है। आपको बता दें कि जो एयरपोर्ट से लोग जो बाहर से काशी में प्रवेश कर रहे हैं उनकी भी चेकिंग की जा रही है, उनकी सूची बनाई जा रही है, उनको टेस्ट लेने के बाद ही काशी में प्रवेश किया जा रहा है। चाहे एयरपोर्ट की बात कर ले, चाहे बस अड्डे की बात कर ले, तो प्रक्रिया तेज हो गई है। नगर निगम की एक टीम बना दी गई है, जो नगर निगम कस्बे में, गाँव में, क्षेत्र में जाकर सैनिटाइज की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। उसके साथ ही जो कूड़े से गंदगी में अंबार रहता है उसको भी हटाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। तो कोविड को लेकर बनारस जो प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो अलर्ट पे है। जी। All right. Rajat, if I come to you, if you're there with us, when it comes to the people and they're following the COVID protocols and the rules and everything, we see that we have been in a situation where we are not used to wearing the mask anymore because we are trusting the vaccinations that we have been given. Talking about the vaccination in particular, what is the situation in Noida? देखिए, वैक्सीन की बात करें, हालांकि जिलाधिकारी की भी कहना है कि बूस्टर डोज जिले में खत्म हो चुकी हैं, लेकिन लोगों की जो डिमांड है बूस्टर डोज की ज्यादा है। हालांकि सेकेंड डोज, फर्स्ट डोज तो लगा लिए, लेकिन जो बूस्टर डोज है उनकी ज्यादा लोगों की मांग है, जिसके चलते लोग जो अस्पताल है वहां पर जाते हैं, लाइनों में लगे रहते हैं, लेकिन बूस्टर डोज ना होने के कारण वो वापस उदास अपने घर को लौट आते हैं। ऐसे जो सीएमओ है सुनील शर्मा, गौतम बुद्ध, उनका भी मानना है कि हमने प्रशासन से मांग की है कि बूस्टर डोज जिले में खत्म हो चुकी है, उनको दिया जाए। तभी जो जिस तरीके से हालात है जिले में, जिस तरीके से कोविड के, जो कि नोएडा एक वो जिला है जो दिल्ली से सटा हुआ इलाका है और ज्यादातर जो लोग हैं वो बाहरी लोग ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा, इंडस्ट्रियल एरिया है, तो ऐसे में नोएडा को ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। यूपी का एक शो विंडो कहा जाता है नोएडा, ऐसे में स्वास्थ्य जो महकमा है वो भी अलर्ट पे रहता है। और लोगों की माने तो लोग मास्क पहनना अभी अनिवार्य नहीं है, लोग लापरवाही हैं वो कर रहे हैं, लेकिन हाँ, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि जो अदर कंट्रियों में जो हालात हैं उसके मुकाबले भारत के ऐसे हालात नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ का स्वास्थ्य महकमा है वो अलर्ट हो चुका है। लोग हैं वो हालांकि बेपरवाह हैं, जिसके चलते लोग कोई भी सड़कों पर घूमते हैं, या आने वाले त्योहार है, न्यू ईयर की बात करें तो वैसे में न्यू ईयर को लोग सेलिब्रेट करें, लेकिन भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाए। तभी जो बढ़ते कोविड के चलते लोग खुद को बचाएं और खुद को सुरक्षित रखें। वैक्सीनेशन की बात करें तो नोएडा जो सीएमओ है उन्होंने प्रस्ताव सरकार के पास भेजा है, जिससे बूस्टर डोज की मांग की। हालांकि और जो डोज होती है, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, ये भारी मात्रा में उपलब्ध है नोएडा के अंदर, लेकिन जो बूस्टर डोज है वो उसकी समाप्ति हो चुकी, जिसके चलते जल्द ही बूस्टर डोज की जो मांग है वो पूरी हो जाएगी। उसके बाद नोएडा वासियों को बूस्टर डोज है वो लगाई जाएगी। प्रशासन है वो अलर्ट है, स्वास्थ्य महकमे है वो मॉक ड्रिल करते हुए नजर आ रहा है, चप्पे चप्पे पे पुलिस प्रशासन है वो भी अलर्ट मोड पर आ रहा है, मास्क पहनने की लोगों को नसीहत दे रहा है कि लोग मास्क पहने, तभी इस बढ़ते कोविड से लोग खुद को बचा सकते हैं, खुद को भी बचाए, लोगों को भी नसीहत दे कि मास्क पहले। जाहिर सी बात है जिस तरीके से हालात है अदर कंट्रियों में, भारत भी पिछली बार की तरह अछूता नहीं था, भारत में भी कोविड के केसेस ज्यादा बढ़े थे। ऐसे में खुद को बचाए, लोगों को बचाए, परिवार को बचाए, मास्क पहनना बेहद जरूरी है। All right, Shakti, also give us a quick response on the fact about vaccination which is taking place in all around India. We've been quite proud about our vaccination structure. What now? What is happening in terms of vaccination in Bihar? देखिए, वैक्सीनेशन की अगर बात करें तो बिहार में जो है वैक्सीनेशन जो है पर डे, जिस पे कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि पर डे जो है हम लोग वैक्सीनेशन कर रहे हैं, और जब कोविड के केसेस कम थे उस दौरान भी वैक्सीनेशन हो रहा था। लेकिन आपको बताएं कि जब कोविड के केसेस अभी फिलहाल जब कम थे, ना के बराबर थे, तो बहुत सारे लोग जो है वो वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं जा रहे थे। और हमने बात भी की थी वहाँ वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद डॉक्टरों से, उन्होंने कहा कि जो लोगों का लोग आ नहीं रहे हैं, लेकिन जैसे ही जो चीन के मामले के बारे में लोगों की जानकारी मिली है तो वैक्सीनेशन सेंटर पर भी जो लोग अब पहुंच रहे हैं और भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं।
बिहार सरकार का कहना है कि वैक्सीनेशन तमाम सुई टीकों की जो है पूरी तरह से इंजेक्शन कोई कमी नहीं है, और तमाम जो बिहार के वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पे जो है पर्याप्त मात्रा में जो वैक्सीन उपलब्ध है, ताकि जो भी लोग बूस्टर डोज लगाना हो या सेकेंड डोज जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं लिया है उनको उससे भी सरकार ने अपील, मुख्यमंत्री ने अपील किया है कि वो लोग भी जो है बूस्टर डोज लगा ले, ताकि किसी भी तरह की जो कोरोना वैक्सीन की समस्या है उससे निपटा जाए। हालांकि बिहार में अभी जो है केसेस नहीं थे, लेकिन गया में अभी एक ब्रेकिंग खबर आई जिसमें 4 लोग जो विदेशी हैं, थाईलैंड और इंग्लैंड से आए थे, उन चारों का आरटीपीसीआर टेस्ट जो है वो पॉजिटिव पाया गया है। तो ऐसे में अब बिहार की समस्या भी धीरे धीरे बिहार में भी जो बढ़ सकती है कोरोना, क्योंकि जो लोग विदेशी आए थे उन लोगों ने किन किन लोगों से मुलाकात की है, इन सब की अब जाँच की जा रही है और केस हिस्ट्री Right. All right. At this point of time, my colleague Mahinder Mai is also joining us on the broadcast to give us updates. Mahinder, tell us about the COVID situation from where you are at and give us updates from there. देखिए, जिस तरीके से हम बाहरी देशों में देख रहे हैं कि किस तरीके से कोविड से महामारी और जो इनसे हॉस्पिटल में भारी भीड़ है, हॉस्पिटल में जगह नहीं है पेशेंट के लिए। अगर हम बात करें भारत की तो, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ नोएडा में, तो नोएडा में भी अभी जो हालात है वो सामान्य है। कल ही 2 केस आए जिसमें से एक ठीक होकर वापस चले गया। मगर यहाँ बात करें नोएडा प्रोटोकॉल की तो प्रशासन और हॉस्पिटल की तरफ से ये कहा गया कि अगर आप हॉस्पिटल में आते हैं तो मास्क जरूर लगाइए, और जो प्रशासन है वो ये कह रही है कि भीड़ भाड़ इलाके में अगर आप जा रहे हैं तो मास्क जरूर लगाइए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, जो दूरी है उचित दूरी बना के रखिए। मगर कहीं ना कहीं देखिए, जो नया साल आ रहा है उसमें सेलिब्रेशन होते, सैकड़ों की संख्या में लोग बाहर निकलते हैं, चाहे वो क्लब जाएं या मॉल जाते हैं, तो वहाँ थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। हमें मास्क लगाना कंपलसरी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से चीन से तस्वीरें निकल कर आ रही है कि रोड जो पेशेंट है वो हॉस्पिटल के दरवाजे पे बैठे हैं, कोई व्हीलचेयर पे बैठा है, तो तस्वीरें बड़ा भयानक है और डरावनी तस्वीर चीन से निकल के आ रही है। मगर जिस तरीके से हमने एक्सपर्ट से भी बात की तो एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि अगर आप अपने फर्स्ट एंड सेकेंड डोज लगा लिया है तो आपको इतनी टेंशन की जरूरत नहीं है। मगर फिर भी आप जो अवेयरनेस है वो रखें, चेहरे पे मास्क जरूर लगाएं, भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं। यहाँ के प्रशासन से बात करें तो तमाम जो नोएडा में प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ 10% के लिए कोविड बेड जो बुक हो चुके हैं। उन्होंने ये जो सीएमओ है उन्होंने ये कहा कि नोएडा में तमाम जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो अपने 10% बेड कोविड पेशेंट के लिए रखे और वो तमाम इंतजाम रखे। अगर दूसरी ओर एंटी टेस्ट होंगे कि राह चलते लोगों का टेस्ट किया जाएगा, जो एयरपोर्ट से नोएडा के लिए आते हैं उनका टेस्ट किया जाएगा, आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाएगा। अगर उनको रिपोर्ट अगर नेगेटिव आती है तो उनको आगे जाने जाएगा, अगर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उनको वहीं क्वारंटाइन किया जाएगा। देखिए जिस तरीके से मामले लगातार बढ़ रहे हैं, चाहे हम अब भारत में भी लगातार केस बढ़ रहे हैं। देखिए क्योंकि कुछ दिन पहले लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं हुआ करते थे, मगर जिस तरीके से तस्वीर आ रही है अमेरिका से, ब्राजील से, चाइना से, तो वो एक बार फिर मजबूर कर रही है कि चेहरे पे मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। तो तमाम जो यहाँ नोएडा में प्रशासन अलर्ट मोड पे है, अस्पताल अलर्ट मोड पे है। अगर कुछ ऐसी केसेस बढ़ते हैं तो जो तमाम अस्पताल में जो बेड है उसको रिजर्व कर दिया गया है। जी All right, Dr. Ishwar Gilada, when it comes to vaccination, we have seen that we are well protected after the vaccinations, and but the booster dose, if we talk about the booster, it has not been applied to a big number of population, wherein the first dose and second dose we see that a good number of population, 95% of the population probably have been vaccinated, but why aren't people taking the booster dose? See, about the booster, there are two things. Number one, people's psyche. The psyche is that if there are more cases and more deaths, people are very much willing to take booster or vaccine. And that we have seen. And we have also seen that some people went to US to take vaccine. And it was called vaccine tourism. Secondly, there was some kind of lapse on the part of the authorities. Initially, it was to make for 60 plus population. They did not take it for everybody, because everybody is at least more so because running class people, if they get COVID, they will be absenteeism and something they will die. So then it was up to 60 population. After a couple of months, they have to see the new open more centers and make it available at all the clinics and hospitals in the country. Because a lot of people will come out, these aged people, they are always connected with the doctor. Like a lot of people, when they come to me, I ask them, have you taken vaccine? No. Doctor, vaccine hai kya? So if I have vaccine, they will take one. But I mean, that I can give typhoid vaccine, I can give hepatitis B vaccine, I can give pneumovac, I can give flu vac, but I cannot give COVID because my clinic, my center, myself is not approved by government. So when there was a shortage,
when we want equality, when we want middle class, rich, poor, everybody to get vaccine. That time, ration on COVID vaccine was good, but now it is in plenty. We allowed close to 5 crore vaccine expire with the Serum Institute. So that is a criminal wastage. So under this situation, there are two things. One is we should approve more and more center and everybody should be able to give vaccine. Secondly, we should promote more this international vaccine. Whatever little hesitancy will go down. And thirdly, we should allow people to understand that look, if it is China, if it is USA, you can be there. So use this threat, particularly in the neighborhood. There is a very good saying that till neighbors are at peace, we cannot be at peace. So impress upon this thing, and people would take it. Probably, I think will not be far from reaching again 75% percentage of booster dose. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.